I'm primarily responsible for ensuring seamless supply of all the Hepter spares that I use in an aviation operation. So you see a Hepter behind me. So my inventory involves everything starting from the smallest of the washer to the main rotor blade that is used in this Hepter. We do everything starting from ascertaining the requirement for the entire year. Then we place our demands on it. We follow a one-tier supply system. We have a central depot in Delhi from where we get all our space. So basically, I am responsible for ensuring that all the Hepters that are there in the squadron are flyworthy all the time. How do you see yourself as a woman aviation officer? And what was your inspiration? Just you want to share? All right. So see, we don't have men and women in Army. We have officers in Army. So yes, it's a wonderful place to be. And of course, if you have got it in you, you must come. Any message you want to give to a girl who want to be officer like you? Any message? Yeah, sure. As I said, if you have got it in you, you must come to this place. It's a wonderful place and great working culture. As I've said, we don't have men and women in Army. We have officers in Army, and we have got great working culture in the Army. And yes, you must come here if you have got it in you. The troops deployed in 14 Corps, be it as part of Western Ladakh or Eastern Ladakh. So we are covering the entire Ladakh as far as the aviation support is concerned. And what are the challenges do you face usually in this area like Ladakh and high altitude? High altitude terrain, like you would have realized, we are at about 10,500 feet. And the high altitude has its own challenges, lack of oxygen. As you go up, the oxygen further reduces. So it has effect on the body and the equipment both. The temperatures in winters drop to -50, and especially in higher altitudes. So that becomes a challenge for both the men and the equipment. Men who fly the machine, men who service the machine, and also the equipment which is already flying on its extremes of its operating envelope. So that itself is a challenge. Training aviators for that task, training my technical staff to handle this task is the challenge here. So how do you ensure the maintenance of the chopper and the aircraft and your technical staff too? How do you maintain your pilot mentally, physically? Well, that's an interesting question. You see, let me answer in two parts. First, for the aviators. The aviators who get posted here, they're already trained, but most of them are not operated in high altitude. So it's a continuous process to train them on the job. It takes quite a while to train them to operate at higher altitudes, which are up to 20,000 and beyond, and the temperatures, as I said, which drop to up to -50, and narrow valleys, restricted areas, difficult terrain, small helipads. So it's a continuous process as far as the aviators are concerned. For the technical staff, they know the job well, but yes, because of the temperatures, because of the extreme, when they have to operate and when they have to when they have to prepare the aircraft in the early morning hours, when the temperature is extreme, it's a challenge. So we have seen a women officer also in your team. So what's the role of her? Women officers are an integral part, and their number is increasing in the entire Indian Army, and so is Army Aviation. So we have ATC officers, women officers, not only as ATC officers, they are as engineering officers, they are as logistic officers, and recently the lady officers have also started flying these helicopters. Sir, we have seen two helicopters for fly like Sheetal and Dhurv. Apart from these two, what are the helicopters have in the Army to fly and to to do any mission in this high altitude area? So primarily, we've got different types of helicopters. The recce and observation helicopters like Cheetals, we are used for reconnaissance and surveillance. RPAs are there for surveillance as well. Then the ALH is there for various utility tasks like induction of troops, de-induction of troops, induction of stores, air maintenance, and also for casualty evacuation. And of course, besides the attack helicopters which are there in the inventory, they're also being flown here. ये चीतल क्लास हेलीकॉप्टर है, बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ. नाइट फ्लाइंग में जो दिक्कतें हैं वो जो जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट फ्लाइंग में दूर तक देखना मुश्किल होता है.
नाइट फ्लाइंग में जो आपकी डेप्थ परसेप्शन होती है, जो गहराई मापने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हम नाइट फ्लाइंग में अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। नाइट फ्लाइंग के लिए स्पेशल ब्रीफिंग्स होती हैं, जो कि हम फ्लाइंग से पहले आते हैं तो मिशन ब्रीफिंग होती है, फिर फ्लाइंग से रिलेटेड ब्रीफिंग होती है, खास करके मौसम की ब्रीफिंग होती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और नाइट फ्लाइंग डे फ्लाइंग से थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। फ्लाइंग सभी मौसमों में हम कर सकते हैं? जो मौसम हमें दिन में अलाउड करता है वही। अगर बारिश शाम को हो रही है तो हम रात में थोड़ी नहीं उड़ेंगे। लद्दाख का मौसम काफी अलग है पूरे देश में, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कत, क्या क्या देखते हैं उड़ने से पहले? लद्दाख इस क्षेत्र में थोड़ी सी रात में जो है हवाएं तेज चलती हैं, तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बट ये दिन में भी है, दिन में भी 12 बजे के बाद हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, तो हमें वेदर जो है खास करके हवाएं, विंड्स आर टर्बुलेंट इन नाइट, तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी हेलीकॉप्टर को, जैसे कि हमारे पास चीतर हेलीकॉप्टर है, इसको नाइट ऑपरेशन में लॉन्च करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। इस एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, हर एक चीज को बिल्कुल ही बारीकी से चेक किया जाता है। हर ट्रेड, जैसे कि एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये अपना अपना ट्रेड की चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को एक इंजीनियरिंग ऑफिसर सर्टिफाई करते हैं फ्लाइंग करने के लिए। जब ये सारे चेक्स सक्सेसफुली हो जाते हैं, उसके बाद इसको एक पायलट एक्सेप्ट करते हैं एंड फिर इसको ऑपरेशंस के लिए ले जाया जाता है यहाँ से। तो हमारे पास अपने पास ऐसा कौन कौन सा हेलीकॉप्टर है जो नाइट में फ्लाई कर सकते हैं? क्या सभी हेलीकॉप्टर नाइट में फ्लाई कर सकते हैं? जो इंडियन आर्मी के पास सारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो नाइट में फ्लाई कर सकते हैं, जो अभी हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। तो इस हेलीकॉप्टर का यूज हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या हम रेस्क्यू में कर सकते हैं या फिर ऐसे या जनरली यूज में? ये देखा जाए तो एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और ये एक कम वेट का हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही कारीगर है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए, उसके अलावा नाइट ऑपरेशंस करने के लिए, एंड जो हमारी कम्युनिकेशन सॉर्टेज होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।